Sure. Chemical kinetic. First question. The rate of reaction is expressed in different ways as follows. The reaction is, so it's like plus 1/2. Okay, तो इसमें 2c रहा होगा and then minus 1/3. Okay, तो इसमें 3d है और क्या है 1/4. Okay, तो इसमें 4a है और सो इसमें सिर्फ b होगा, मतलब कि ऐसी रिएक्शन है. So 3d plus b gives 2c plus 4a, which is, yes, this thing. Next question. A reaction follows the given concentration m, okay, versus time graph. The rate for this reaction at 20 seconds will be, so at 20 seconds ये चीज़ है. ओके, तो स्लोप जो है वो ओके अपने को दिया नहीं. इनफैक्ट दिस इज रियली नॉट गुड. द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट 20 seconds, राइट. दिस इज m वर्सेस t, राइट. तो अपने को ये स्लोप ढूंढना है. हाउ मच इज़ द स्लोप. ये कितने हैं, ये 2 यूनिट्स है अपॉन ये जो भी चीज़ है. लाइक ओके 2 टाइम्स ऑफ 1 यूनिट कितने का है 0.1 अपॉन लेट्स जस्ट से इट्स लाइक 1.5 यूनिट्स. सो 1.5 टाइम्स और 1 यूनिट कितने का है 20. तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 10 यानी कि 30 यहाँ पे, राइट. यस 30, विच मीन्स कि ये जो 0.2 अपॉन 30 विच इज़ लाइक 0.02 अपॉन 3, मतलब कि 0. हाँ ठीक है, वैसे ही रहने दो इसको. इनफैक्ट लाइक 2/3 टाइम्स 10 पावर 8, दैट शुड डू इट, विच इज़ 0.6 समथिंग. 0.67 टाइम्स 10 पावर -2 यानी कि 6.7 टाइम्स 10 पावर -3, राइट. सो 10 पावर -3 के अराउंड आएगा. आई नो स्लोप एक्जैक्टली वैसा नहीं है, बट वट एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस A एंड B इज गिवन बाय रेट इक्वल टू K. ओके, जो कि ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड हाविंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, द रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी. सो A का तुमने डबल कर दिया एंड हाविंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, सो लाइक 2 पावर n एंड देन यू गॉट 1/2 पावर m, राइट. नया रेट इतना होगा पिछले वाले के. सो दी रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू अर्लियर रेट 2 पावर n minus m. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two substances A T1/2 equal to 5 minute and T1, ठीक है, are taken in such a way that initially concentration of A equal to concentration of, okay, 4 times the concentration of B. The time after which both the concentrations will be equal is, so B की concentration तुम C बोल दो और इसकी तुम 4C बोल दो. और क्या है, इसका 5 minutes और इसका 15 minutes, राइट. सो इसकी concentration को तुम्हें इक्वल करना है. 4 टाइम्स 1/2 times T/5 minutes is equal to, so just 1 actually, 1/2 times T/15 minutes, right. Yeah, yeah, that should be the thing, which means 2 की पावर T/5 minus 2 रेसिप्रोकल कर रहा हूँ इसका, इज इक्वल टू 2 की पावर T/15. एक ही तरीका है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, विच मीन्स कि T/5 minus T/15 विच इज़ लाइक 2T/15 इक्वल टू 2, मतलब कि T इक्वल टू 15 मिनट्स. 15 मिनट्स के सेम हो जाएंगे. दैट्स व्हाट इट्स एक्चुअली सेइंग, राइट, होपफुली. सो 15 मिनट्स में कि इसके 3 टाइम्स हो चुके होंगे. या ओके, इट मेक्स परफेक्ट सेंस. सो लाइक T इक्वल टू 15 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a first order reaction, the concentration of the reactant decreases from 0.8 to 0.4 in 15 minutes. So उसकी half life 15 minutes है. The first order reaction, right, of course. The time taken for the concentration to okay, for the concentration change from 0.1 molar to 0.00 जो भी, कितना इसमें फैक्टर है 0.25 का, यानी कि 1/4 हो गई, राइट. यहाँ पे हाफ हुई तो 15 मिनट्स, यहाँ पे 1/4 हो गई तो 30 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट, the rate equation for the first order, so yes, the rate equation for the reaction 2A plus B gives C is found to be rate equal to K times concentration of A concentration of B. Okay. The correct statement in relation to this is the units of K must be per second. ठीक है, कर लेते हैं. So rate will just be like molar per second, right, and that's equal to K times, so concentration of A मतलब कि concentration per second हो जाएगा molar per, oh okay, just molar, और फिर यहाँ पे molar आएगा, मतलब molar squared, मतलब कि K is having concentration of 1/molar times second, right. मतलब कि अगर इसको सही से करूँ, लीटर अपॉन मोल सेकेंड. ओके, सो ये तो इनकरेक्ट है. T1/2 इज अ कांस्टेंट. हाँ, व्हाट, हाफ लाइफ इज अ कांस्टेंट.
uh it's a weird thing. So like okay, suppose ये concentrations तुमने अलग अलग दी हुई है and then okay नहीं ये फर्स्ट डिग्री ओके सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जस्ट लेट्स से सी बी है सी बी माइनस दिस इज़ वेरी वियर्ड सो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे सपोज एक्स अमाउंट आगे बढ़ चुकी रिएक्शन देन सी बी माइनस तो इसको मैं सिर्फ बी बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो इनिशियली थी सो बी नॉट एंड देन माइनस एक्स रिएक्शन आगे बढ़ चुकी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस टू एक्स राइट तो इतना बचा रहेगा इनका प्रोडक्ट टाइम्स के दैट्स अवर रेट दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी क्या ये किसी एंगल से फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है मुझे तो नहीं लग रहा इट्स लाइक ये नीचे आएगा और फिर यहाँ पे से हाँ वो अजीब होने वाला है स्टिल यू कैन ट्राई इट आउट यू कैन डू पार्शियल फ्रैक्शंस एंड व्हाट नॉट बट देन इन द एंड इट्स लाइक हाफ लाइफ ये अजीब है ओके और क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए twice the rate of disappearance of A. Wait, no. जो रेट है दैट इज इक्वल टू द फॉर्मेशन अपॉन ए ओके लाइक डी सी अपॉन डी टी राइट दैट्स ऑल्सो इक्वल टू सो हर एरो में दो कंज्यूम हो रहा है मतलब कि क्या यहाँ पे नेगेटिव वन अपॉन टू डी अपॉन डी टी होगा राइट सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग इज एक्चुअली हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डज दैट मेक सेंस ये तो इनकरेक्ट है वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी या इट सीम्स सो yeah right initial concentration of A and B yeah that's actually correct because wait but yeah I mean it must be like that right नहीं तो फिर वो K तुम यहाँ पे करती क्यों जो भी है next question so this is correct statement in relation to this reaction okay T1 upon 4 can be taken as the time required okay time taken for the concentration of reaction to drop to 3/4 of its value okay of a reactant to drop to 3/4 of its value kind of weird if the rate constant for a first order reaction is K then T1 upon 4 can be written as but I don't get it 3/4 of its value how is that one okay like 1/4 of the reaction is done at that point इसलिए okay so मैं जो सोच रहा था वो T3/4 रहेगा जो भी है so what's the thing फर्स्ट ऑर्डर इज लाइक जस्ट ई पावर नेगेटिव के टी का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो बार बार एंड दिस विल जस्ट बी लाइक कितने अब कितना फ्रैक्शन बचा हुआ जस्ट 3/4 राइट और यहाँ पे T1/4 आ जाएगा व्हाट डज दैट मीन नेचुरल लॉग ऑफ 3/4 ऑफ ई हो लाइक नेचुरल लॉग ऑफ 4/3 and 1 upon k of this thing that's actually T1 upon 4 right yeah and natural log of 4/3 हम लोगों ने दिया नहीं है seriously ठीक है so like 2 natural log of 2 which is 2 times of this thing approximately 0.7 है so 0.7 times 2 is just 1.4 minus natural log of 3 which is 1.1 so 0.3 upon k close to that I guess next question a reaction was found to be second order with respect to the concentration of carbon monoxide if the concentration of the carbon monoxide is doubled right the okay with everything else kept the same the rate of reaction will be of course it's like second order so it will be increased by 4 times सही तो है ना ये yeah it's to power 2 it's the thing next question the energies of activation for forward and reverse reactions are 180 and 200 okay the presence of catalyst lowers the activation energies of both by 100 kilojoule per mole okay the magnitude of the enthalpy change of the reaction in the presence of the catalyst this is still the same thing come on right so forward के लिए तुम्हारा क्या है 180 किलोजूल पर मोल और बैकवर्ड के लिए 200 किलोजूल पर मोल है राइट so तुम्हारा डेल्टा एच नेगेटिव होगा और कितना होगा 20 so like negative 20 kilojule per mole that's our delta H that's the enthalpy change so it's still the same doesn't matter कि तुमने चेंज किया कि नहीं किया ठीक है ना अगर तुम 100 से कर देते हो इट्स लाइक फॉरवर्ड के लिए तुम्हारा 80 हो जाता है बैकवर्ड के लिए तुम्हारा 100 हो जाता है स्टिल सेम चेंज है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन A to B
Zero order reaction. Oh, okay. So dp upon dt is a constant actually. B increases with time. This is not correct. T 1 upon 2 versus a naught. So it this is actually proportional to a kitna hai, right? Yeah, that doesn't make sense. T 3 fourth a naught. This looks correct. So 3/4 रिलेशन होने के लिए 1/4 करने के लिए बेसिकली हाँ ठीक है ना लाइक 3/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन जो भी के रहेगा दैट्स द थिंग that's the time 3/4 right. So yeah, next question. For a hypothetical reaction, okay, a plus 3b gives p and then m gives 2q plus r. Okay, if the reactions are carried simultaneously in a reactor such that the temperature is not changing, if rate of disappearance of b is y molar per second and the rate of formation of q is, अच्छा जो b का है रेट ऑफ, ओके इसका तुमने डेल्टा एच दिया है, तुमने इसका भी डेल्टा एच दिया राइट. टेम्परेचर इज़ नॉट चेंजिंग तो हीट फ्लो है कि नहीं बाहर से, होगा ना ऑफकोर्स. ओके द रेट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पी इज दिस थिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, आई गेट वो क्या कर रहे हैं, दे वांट अस टू लाइक या वो चाहते हैं कि अपन एडियामेटिक अज्यूम करें राइट, क्योंकि तभी इसका कुछ इंपॉर्टेंस रहने वाला है. या ओके सो जो पहली रिएक्शन है द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी इज़ वाई राइट. तो वाई अपॉन 3 इज़ द रेट ऑफ दिस रिएक्शंस लाइक y upon 3 times negative 2x is the enthalpy per second, जो भी है right. Okay, if the rate of yeah okay then the rate of formation of q is, so rate of formation को अपन r बोल देते हैं right, then r upon 2 is the rate of this reaction, so this times plus x, ये इसकी एंथैल्पी रहेगी हर सेकंड जो चेंज हो रही है. सो इनका जो सम है दैट शुड बी ज़ीरो बिकॉज नो हीट ट्रांसफर्ड. ऐसा कुछ तो भी करना है अपने को. आई नो अजीब है, इट शुड नॉट बी करेक्ट बट देन वॉट एवर. लाइक आर इज जस्ट इक्वल टू 4/3 वाई. दिस इज़ वेरी वियर्ड, इट शुड नॉट बी करेक्ट बट जो भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Gaseous reaction A to B plus C follows first order kinetics. Concentration of A changes from 1 molar to 0.25 in something minutes. Find the rate of the reaction when concentration is 0.1 molar. So 1/4 होने के लिए तुम्हें टाइम रिक्वायर्ड ऐसा है राइट. ओके सो व्हाट यू नो लाइक नेचुरल लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू KT मतलब क्या अपॉन दिस टाइम लाइक 138.6 that is equal to K right. Yeah that makes sense. So अपने को K समझ गया. Find the rate of the reaction when concentration is this, so 0.1 molar times K basically which is just this thing, so like natural log of 4 upon 1. oh ये minutes में like okay 138.6 times oh तुम्हें per minute ही चाहिए, बढ़िया. okay awesome, this is the thing. yeah इसको कैलकुलेट कर लेते हैं then you are done. so this is like 10 power negative 1 कर दो इसको. This is natural log of 4 is 2 times of natural log of 3 like 2 times of 0.7 यानी कि 1.7. 17 is 10 power 81 तो इन्हें 2 हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा क्या approximately 140, so like 14 times 10 मतलब यहाँ पे 10 power negative 3 कर दो right. It is 17/14 times 10 power negative 3 उसके अराउंड है. yeah so that's like 1 point something times 10 power negative 3. so इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि काम कर रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये शायद से है 2 times 10 power. okay that doesn't make any sense. 2 कैसे आया इसमें, no that must be the thing, this is the thing of course right. ये 1/4 हो गया, so like yeah 2 times of 0.7 यानी कि क्या of course like 2 times of 0.7 it just shit it's not 70 it's like 14. oh god अभी क्या कर रहा हूँ आज. so it's just 10 power negative 3 exactly. next question. the reaction x plus 2y plus z gives and occurs by the following. so एक बार चेक कर लेते हैं. so 1.4 आएगा यहाँ पे, so that time 0 point is like 0.14 upon 140 right. so it's like 14 times 10 power negative 2 और यहाँ पे 14 times 10 so 10 power negative 3. next question. consider the following first order competing x gives a plus b and y gives c plus d. If 50% of the reaction of x was completed when 96% of the reaction was y was completed, the ratio of the rates
rate constants k2 upon k1. Okay, so like t half of x is just the same thing as, so कैसे निकालते t anything basically natural log of the fraction बचा हुआ है राइट अपॉन तुम्हारा जो k वैल्यू है राइट. सो इस केस में क्या हो रहा है, फ्रैक्शन बचा हुआ है जस्ट नेगेटिव ऑफ कोर्स. सो लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन अपॉन k1 दैट्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ. सो इसमें क्या 96% कंप्लीट होगा, लाइक 4% बचा हुआ है राइट. सो 100/4 इज 25, so natural log 25 over here. नेगेटिव करना है, याद करना. I think upon k2 right, that's the thing. Yeah, so like k2 upon k1 चाहिए अपने को, इसका k2 है ना. Yeah, okay, और दोनों फर्स्ट ऑर्डर है. I think k2 upon k1 is just equal to natural log of 25 and natural log of 2, which is like log base 2 of 25, which ये तो अजीब हो गया. Yeah, I never thought मुझे ये करना पड़ेगा. अब क्या, so like okay, 2 times of natural log of 5 upon natural log of 2. Natural log of 2 is approximately 0.7. Natural log of 5 is how much? Oh, I don't know. Unfortunately, seems I don't know. E square कितना होगा? It's like between 4 and 9. So this is a 1 point something, right? Natural log of 5. I don't know यार. Natural log of 3 मुझे कहाँ पे पता है. So maybe just do log base 2 of 25, right? That's actually good enough. This is not going good. Still अगर मैं अप्रॉक्सीमेट नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन नेचुरल ऑफ 10 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2 बोल सकता हूँ राइट. सो लाइक 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 2.3 माइनस 0.7 समथिंग लाइक दैट. मतलब कि कितना 1 पॉइंट, इसको 30 माइनस 0.6 हो गया, फिर 1.6 आ जाएगा. 1.6. Wait, I'm starting to remember something. Natural log of 3 is 1.1 and natural log of 5 is 1.71, right? I guess that was the thing. Or was it not? मुझे सब कुछ याद करना पड़ेगा. Anyway, I'm just gonna go with 1.71 because I think वो है. So then this is like 2 times of 1.71 upon 0.7 basically. यानी कि क्या हो जाएगा ये 1.7 ही ले लो यार, क्या जा रहा है. जस्ट यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3.42 आएगा, 3.42 upon 0.7, more like 0.693 but रहने दो. Okay, so the 0.7. Yes, it's like 34.2 upon 7, 34 upon 7 basically. Close to 5, I guess. Yeah, this looks close to 5. Log base, oh no, this is very bad because log base 2 of 25 is definitely not close to 5. Log 2 power 5 is 32. How is that close to 5? That doesn't make any sense. It's actually this thing. ये कैसे हो गया? But ठीक है ना, 5 से close. Okay, whatever. Next question. Yeah, ठीक है ना. No big deal. And 25. This is not making sense. Something's not going correct over here. I think 1.6 better होगा to use, right? So 2 times of that is like 3.2. 3.2 upon 7, right? Yeah. Wait, what? 3.2 upon 0.7, sorry. So 32.7. That would be better, which is like how much? So first you need 4, 28. उसका बाद में क्या बचेगा 4 once again is like उसके लिए 0.5 and then 50. For that you need 7, approximately this much. 4.57. Yes, this not exactly like that, but चलो जो भी है. Next question. Consider the reaction A to B graph given. Okay, graph between half-life and initial concentration of the reactant is. Okay, so अच्छा, like ठीक है, linear increasing है, whatever. So hence graph between negative dA upon dt, which is actually a constant, and time is just a constant, right? So this is the thing. Next question. At certain temperature, the half-life period for the thermal decomposition of gaseous substance, okay, depends on the initial partial pressure of the substance as follows. So the 500 half-life is 235. When it's 250, half-life is this thing. Okay, anything about it? इसको मैं डबल करके देखता हूँ. इट्स लाइक 4 और फिर यहाँ पे 6 एंड देन 470 है. नॉट मेकिंग सेंस. तुम्हारा पार्शियल प्रेशर आधा हो गया, देन हाफ लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है. सो इट टेक्स मोर टाइम. ओके,
It takes more time to become half. Find the order of the reaction. Okay, suppose order तुम्हारी जो है which is, let's just say, yeah, it is so like तुम्हारा क्या होगा, dp upon dt is equal to negative k times p power x ले लो, right? x is n बोल दो, n is the order of the reaction. So this will just give like p power negative n उधर गया, and it's not n equal to 1 for sure. तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव p पावर नेगेटिव n, उसका इंटीग्रेशन करना है, लाइक नेगेटिव p पावर नेगेटिव n प्लस 1 अपॉन नेगेटिव n प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू के टी प्लस काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट जो भी है, इट गोज फ्रॉम वॉट टू वॉट, सो लाइक पी नॉट टू जो भी हमारा पी होगा, राइट. इन दिस केस बिकॉज अपने हाफ लाइफ वगैरह देखनी है, जस्ट पी नॉट अपॉन 2. सो लाइक क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख दो n माइनस 1, राइट, लाइक 1 अपॉन n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन लाइक पी नॉट की पावर, ओके 2 अपॉन पी नॉट की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन पी नॉट की पावर n माइनस 1, राइट, और समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे नेगेटिव भी था, उसका अपन ने क्या किया, उसका अपन ने ये चेंज कर दिया, राइट. सो गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस और समथिंग लाइक दैट, या ओके, एंड देन माइनस इज इक्वल टू के टी, राइट. सो इस के टी अपॉन 1 अपॉन 2, मतलब क्या, जो टू पी सॉरी 2 पावर n माइनस 1 माइनस, हाँ वो सब जो भी है, ये सारे जो कॉन्स्टेंट्स है उसको भूल जाओ, जस्ट 1 अपॉन पी नॉट पावर n माइनस 1 दैट यू हैव टू लुक फॉर, राइट. सो दैट्स जस्ट इक्वल टू के टी 1 अपॉन 2. तो इसका तुम नेचुरल लॉग ले लो हर जगह पे, देन व्हाट यू हैव इज नेगेटिव n माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट, राइट. सो चेंज इन दिस थिंग इज द सेम थिंग एज द चेंज इन, बाकी सब तो कांस्टेंट है, इट जस्ट चेंज इन द टी हाफ, राइट. सो या दैट लुक्स गुड, मतलब n माइनस 1 बाहर निकाल लो, n माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट का जो चेंज है विच इज़ लाइक ओके वॉट एवर, दैट्स इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा टी 1 अपॉन 2. चलो इसको पुट करते हैं इसमें, n माइनस 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ, सो पी 2 अपॉन टी 1 कर डालते हैं विच इज़ 1 अपॉन 2, उसका नेगेटिव कर ही देते ना, मतलब नेचुरल ऑफ 2 इज इक्वल टू डेल्टा टी, हाँ ठीक है. सो दैट्स जस्ट 950 अपॉन दिस थिंग विच इज़ 5, और उसको उधर ले लो, सो 1 एंड देन यहाँ पे जगह 715 वॉट एवर. सो दिस इज द थिंग, yeah, like n minus 1 is just equal to 715 upon n upon natural log of 2 basically. Isn't that right? Yeah, it seems so. It's like that's just 4, this is 1, sure. 715, that's the thing. Yes. So निकालो फिर n minus 1 कितना है, natural log of 2 is approximately 0.7, इसको तुम 700 ले लो, इसको तुम 0.7 ले लो. This is like okay, this is maybe not the best thing, तो गड़बड़ हो रही है इसमें. ओह ये मिनट्स में, सॉरी, ओह ओके. एम आई श्योर मैंने करेक्टली किया, ये कुछ और इसमें चेंज हो रहा था समथिंग. अरे मैंने नेचुरल लॉग लिया ना यार, तो इसमें भी नेचुरल लॉग मुझे लेना पड़ेगा. व्हाट एम आई डूइंग, सो दिस इज़ नॉट दिस, इट्स लाइक डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ टी 1 अपॉन 2, तो वो कितना है, राइट. दिस इज़ डेफिनेटली नॉट दिस थिंग, इट्स लाइक नेचुरल लॉग ऑफ क्या, ये अपॉन ये, राइट. सो 950 अपॉन 235, दैट इज़ द थिंग. ओके चलो करते फिर इसको अब. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ये चीज़, नेचुरल लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, ये सिम्प्लीफाई करूँगा मैं इसको, तो 5 से किया लाइक 1, फिर 45 के लिए 90 अपॉन 4 एंड देन 35 के लिए 7, सो 47 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2 विच इज़ आई डोंट नो 47 सीम्स. This times 3 is like 12 and 21 is 141 distance. 5 would be कुछ बड़ा ही हो गया. Distance 5 ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, राइट. Distance 4 is like 16 और फिर यहाँ पे 28, so 188 approximately 4. This is natural log of 4 approximately. It's like log base 2 of 4, मतलब क्या 2. So n equal to 3. Next question. यार मुझे ये चीज़ याद रखनी चाहिए that n minus 1 is equal to like क्या, नेचुरल लॉग, सो डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ टी 1 अपॉन 2, या फिर टी कुछ भी लाइक टी 1 अपॉन एक्स, जो भी तुम्हें करना होगा, बिकॉज इन दी एंड वो सेम ही चीज़ होने वाली है, अपॉन डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट या फिर सी नॉट या फिर जो भी है, राइट. दिस आई शुड रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कंसिडर द रिएक्शन A to A gives B plus C
Initial concentration of A is this thing, 20 minutes time is given for completion of 20% reaction. Initial concentration कितनी है 20, okay sorry it's 1, okay 20-minute time is given for the completion of 20% reaction. dB upon dt which is like negative dA upon dt, that is equal to K times A. हाँ ठीक है, first order है. Then half life of, then what's the half life? 20% के लिए तुम्हारे पास में ये है, so कितना बचा होगा? 80% तुम्हारा A बचा होगा, which means like 8 upon 10 यानी कि 4 upon 5. So natural log of 5 upon 4 right, that is just equal to K times, इसमें जो अपने को टाइम दिया is call this T naught या फिर कैपिटल T या फिर जो भी है. We want T1 upon 2, so उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, natural of 2 is equal to this, yeah right, that makes perfect sense. So just divide to get rid of the K thing. So T1 upon T is equal to natural of 2 upon ये गंदी सी चीज़ natural of 5 minus natural of 4 और जो भी है. So yeah, like T and then you got natural log of 2 upon natural of 5 minus natural log of 4. That does it, or I think, right? Yeah. हाँ ये सही तो लग रहा है. What can go wrong? So T कितना था तुम्हारा? And then once again like natural log of 5. I should really have remembered कि natural log of 5 क्या होता है. क्या मैंने लिखा भी था कहीं? शायद लिखा भी होगा. I don't. This is weird. Like E is 2 point something. E square is 7.4. E cube is 20. So 1 point something होगा. I know it's like 1.71 most likely. Still, it's kind of weird. ठीक है ना, फिर एग्जैक्ट थोड़ी सी वैल्यूज यूज़ करते हैं. दिस विल बी 0.693 अपॉन 1.71 माइनस इसका डबल विच इज़ लाइक 6 और फिर यहाँ पे 8 1 कैरिड ऑन. दिस इज़ 12 और यहाँ पे 1 लाइक 1.3 राइट होपफुली. तो इसको करो 1.71 माइनस 1.386 4 आ जाएगा. एंड देन दिस इज़ लाइक 2 एंड दिस इज़, आई एम नॉट श्योर कि 1.71 वैल्यू थी कि नहीं थी, बट ये बार बार मुझे यूज़ करना पड़ रहा है राइट. ओके और क्या है, और ये हो जाएगा 4, सो लाइक 0.424. सो 693 अपॉन 0.424 राइट, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक 700 अपॉन, आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं इसको, 450 शायद से, या 424 ही अच्छा था, 420 बोल देते. Yeah, that looks good. So ये गया it is 70 upon 42 which is like 10 upon 6 which is like 5 upon 3. So yeah, that's this thing, 5 upon 3 times T which is 5 upon 3 times कितना 20 minutes. You want in minutes right? Okay, so like 100 upon 3 minutes which is 3 point जो भी है. So those many minutes which is not here. Seriously वो नहीं है यहाँ पे. कैन यू बिलीव दैट? अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 चाहिए था. लुक 4 फिर यहाँ पे ओके यहाँ पे 3 चाहिए था, समझा. इट शुड बी 324 इन दैट केस. सो अपन क्या करें इन दैट केस, लाइक 700 अपॉन 320. सो 70 अपॉन 32 बोल सकते हैं, यानी कि कितना वो अपन बाद में करेंगे. इन दिस टाइम्स व्हाट 20 राइट. सो व्हाट डज दिस मीन, ये 2 का 1 कर डालो, दिस इज जस्ट 16 and then you got 700 upon 16. Not exactly what I want. So मैं बोल सकता हूँ कि it's just 7 times 25 upon 4 which is like 14 and 35 के लिए क्या हो जाएगा 175 upon 4. Yeah, just 25 of course. Right, which is 4 और फिर 16 then 15 के लिए क्या चाहिए अपने को, like approximately 16. हाँ करो ना सही से, 12 3 and point फिर 30 for which you need 7 28 and then 2 for that you just need 5. So 3.75 उसका अराउंड चाहिए अपने को which is once again not here. What's going on? क्या गलत कर रहा हूँ मैं? ये सारी वैल्यूज बहुत ही पास में दी इन लोगों ने. अब मैं क्या गलत कर रहा हूँ यार? क्या मैं अप्रॉक्सीमेशन सही से नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है? नो बट आई मस्ट बी डूइंग इट करेक्टली.
हाफ लाइफ या इट्स जस्ट दिस थिंग नेचुरल ऑफ 2 upon natural of 5 upon 4 जो भी है this thing then for some reason it's not working. 2 times of this is like 6 आएगा फिर यहाँ पे 8 1 carried on third yeah it is the thing. और फिर गलत क्यों हो रहा है ये? अब तो कुछ मैंने सही से किया यार जो 693 upon 324 why is that not going correctly? 693 upon एकदम ही एग्जैक्ट लेते थोड़ा सा 324 राइट. सो पहले क्या लगेगा अपने को? और इन दिस टाइम्स 20 एज वेल राइट. तो एक काम उसमें पहले 20 से मल्टीप्लाई कर डालते हैं एंड देन विल सी. सो 693 अपॉन इसको 2 से डिवाइड कर 16 162 एंड दैट टाइम्स 0 लाइक 6930 अपॉन 162 बोल सकते हैं इसको. और इसको 2 से डिवाइड किया नीचे आ जाएगा 81 यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड देन 4 5 गया उधर 6 एंड देन ये चीज़ राइट. सो 3 4 6 5 अपॉन एक काम करो उसको इतनी एक बार सही से करते हैं. सो 4 मतलब कि -3 2 एंड देन यहाँ पे 4 आ जाएगा. येस दिस इज लाइक 2 और यहाँ पे 2 सो 2 2 5 फॉर विच यू प्रॉब्ली नीड 3 तो नहीं 2. हाँ वही आ रहा है जो लास्ट टाइम आया था. दिस इज नन ऑफ दिस इन दैट केस. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या था ये? मुझे नहीं समझा ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ में. नेक्स्ट if decomposition reaction follows the first order kinetics then the graph for rate of formation of R rate of formation of B against time will be follows first order kinetics. okay rate of formation of B against time क्या पता है ना 1/2 की पावर T अपॉन हाँ ठीक है वो अपने को पता है. सो डिक्रीजिंग लाइक दिस थिंग. इनिशियली क्या था लाइक कुछ तो भी वैल्यू थी उसके बाद स्लोप जो रहेगा ऐसे कैसा रहेगा लाइक 2 पावर फिर ई पावर नेगेटिव के टी ले लो अभी के लिए राइट. दैट्स द थिंग द फैक्टर. सो इसका जो डेरिवेटिव रहेगा इट्स लाइक नेगेटिव के ई पावर. ओके वो तो अपने को पता है वो दैट इज अच्छा नहीं रेट का रेट. ओके सो या इट्स स्टिल द सेम थिंग मतलब जो इनिशियली काफ़ी लाइक ओके जो भी है कर लेते हैं. This is the thing. I know that. Next question. For the first order decomposition of SO2Cl2, that is the thing, right? dV upon dt. What's this time? Yeah. For the first order decomposition of SO2Cl2, a graph of log A naught minus x versus t is as shown. What is the rate constant? A naught minus x. हाँ तो बचा हुआ जो रहेगा वो. Okay. So what is the rate constant? तो इनिशियली -1 पे था राइट. लाइक नेचुरल लॉग. सो लॉग जो है वो लॉग बेस 10 है कि क्या है? आई डोंट नो. लॉग जस्ट लॉग आई थिंक लॉग बेस 10 होगा. सो लॉग ऑफ बची हुई जो कॉन्सेंट्रेशन है राइट दैट इज इक्वल टू व्हाट इनिशियली एट इक्वल टू 0 इट्स -1 एंड देन प्लस जो हमारा स्लोप है वो कितना है? इट्स 2 upon 10 or something I guess. So 0.2 yeah and then terms of t that should do it hopefully. So क्या इसका मतलब क्या हुआ? अब वैसे तो निकालना क्या है? what is the rate constant? so c is just equal to हाँ वो जो भी है 10 0.1 then got e power something. oh यहाँ पे मतलब नेगेटिव रहेगा बिकॉज स्लोप h में नेगेटिव है एज टाइम इंक्रीजेस ये चीज़ डिक्रीज हो रही है. सो e पावर नेगेटिव 0.2 टाइम्स t. सो अवर रेट कॉन्सेंट 0.2 राइट या और ये t मिनट्स में एंड ओ यू वांट सेकेंड इनवर्स. ओके लाइक 0.2 पर मिनट दैट्स थिंग और दैट्स लाइक 1/5 टाइम्स ऑफ 60 इतने सेकेंड राइट विच इज़ 1/300 यानी कि लाइक ओके 300 सीरियसली. और कुछ भी अपने को आंसर में मैच करते हुए नहीं दिख रहा है बिकॉज वाई सेकेंड इनवर्स राइट आई डिड द थिंग और वो स्टिल काम नहीं कर रहा है. दिमाग खराब हो रहा है मेरा. नो इट शुड हैव वर्कड. इट शुड रियली हैव वर्कड.
फिर क्यों नहीं काम कर रहा? स्लोप इज -2/10, -0.2, 1/5, 1/5 per minute, 1/300. That is the thing, like 10 power -2/3 यानी कि 0.3 something, 3.3 some, yeah, like 10 power -3, right? और वो नहीं है यहाँ पे. Something is not making sense. ऐसा क्यों हो रहा होगा? What is the rate constant? नहीं यार, और क्या हो सकता है? This is not making sense. और ये जो चीज़ है, ये क्या है एग्जैक्टली? कॉन्स्टेंट. और अंदर क्या है वैसे? ओह ओके, इट्स लाइक 10 पावर. ओके, इसलिए हुआ ये, इसलिए. ओके, समझा, मैं समझा. दिस इज सो बैड. इट्स लाइक ये हो जाएगा 10 पावर -1/300, -1/3 10.82. ये चीज़ t, राइट, विच इज़ लाइक e पावर नेचुरल ऑफ 10, विच इज़ लाइक 2.3. तो ये हो जाएगा -2.3/3 टाइम्स 10.82 t. so that's our rate constant, which is like needed. क्या बोलते हैं इसको? 23/3 टाइम्स 10 पावर -3 का डालूँ, विच इज़ लाइक व्हाट? सो 21 के लिए 7 चाहिए अपने को. 7 पॉइंट, फिर 20 वापस आएगा, लाइक 7.7, और फिर क्या? Yeah, almost 7.7. That should be the thing. 7.7 times 10.83. Next question. The rate constant for the forward reaction into 2B is 1.5 times 10.83 second inverse at 100 kelvins. If 10.85 moles of A and 100 moles of B are present in a 10-liter vessel, what? 10.85 moles of A. अच्छा, B के भी मोल्स है क्या? रेट कॉन्स्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर. इक्विलिब्रियम में ऐसा है. ओके, कॉन्सेंट्रेशंस क्या है? एक ही. सो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन निकाल देते हैं. और कितना वॉल्यूम है? 10-liter वेसल. ओके, सो अवर कॉन्सेंट्रेशन. मोल्स कितने हैं? मोल्स इज 10.85 मोल्स एंड 10 power 2 मोल्स. और वॉल्यूम 10 है हर जगह पे. सो कॉन्सेंट्रेशन इज लाइक 10.86, और यहाँ पे जगह 10 power 1 is 10, right? Okay. If okay. Right, and the rate constant for the backward reaction is, or forward constant for the forward reaction is this thing, right? So like 3/2 times 10 power -3, that times is the concentration, just 10 power -6, that is equal to concentration of p का स्क्वायर, मतलब कि 10 स्क्वायर. और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये जो भी रेट कॉन्स्टेंट रहने वाला है बैकवर्ड के लिए, राइट? एग्जैक्टली. लाइक के इज इक्वल टू 10 power -8 आ जाएगा. 10 power -11 बोल दो इसको, एंड देन यू गॉट 3/2. दैट शुड बी डूइंग इट. Wait. Yeah. What else? That has to be the thing, of course. Yes. So just this thing. यानी कि कितना? 1.5 times 10 power -11. Next question. Reaction A plus B gives C plus D follows the rate law. Rate is equal to K A power 1/2 B power 1/2. Starting with the initial concentration of 1 mole, okay, of 1 molar of A and B each. What is the time taken for the concentration of A to become 0.25? So A का क्या हो जाएगा? Like A minus X बोल दो. 1 minus X, sorry. So like 1 minus X की power 1/2, और फिर वापस 1/2, because yeah, it's like 1 basically, right? It's terms of K. So our dx upon dt is just this thing. ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर है, we know that. So like क्या बोल सकते हैं अपन कि t1 minus x concentration of A basically, right? This is just concentration of A, और यहाँ पे नेगेटिव t concentration of A upon dt बोल दो, right? So आपने क्या करना है? K की वैल्यू अपने को दी हुई है, राइट? ओके, so to become 0.25 negative 1/4, like 2 natural log of 2 upon K, that's our time required. So yeah, that's like 2 times of 0.7 upon ये चीज़, which is 2.3 times. Seriously, that's like natural log of 10, isn't it? Natural log of 10. Okay, it's kind of weird. So ये हो जाएगा 2 natural log of 2 upon natural log of 10 times 10 power -3, ऊपर जाके हो जाएगा 10 power 3. कितने सेकेंड्स, राइट? ये जो चीज़ है जस्ट 2 times of log base 10 of 2.
which is 0.3, so like 0.6 times h, meaning 6 times 10 power negative 4. That is the thing. Itna, sorry, a 10 power negative, okay, it's like 10 power 2, so 600 seconds, यानी कि कितना 10 minutes, okay, 600 seconds जो भी. The variation concentration of, okay, A with time in two experiments starting with two different initial concentrations of A is given in the following graph. The reaction is represented as A gives B. What is the rate of reaction when concentration of A in aqueous solution was 1.8 molar? This is concentration of A. दो अलग अलग concentration में start किया है. The reaction is A aqueous gives B aqueous. Okay. What is the rate of reaction? किस टाइप की रिएक्शन है वैसे ये? I don't know. What is the rate of reaction? So mole per minute when the concentration of A in aqueous solution was 1.8. Concentration 1.8, तब rate of reaction क्या है? 1.8 तो कभी था ही नहीं. ओके, इस पूरे ग्राफ में. इट्स काइंड ऑफ वियर्ड. ये टाइप का कर्व, वैसे ये एग्जैक्टली कैसा कर्व है? क्या ये okay, this is kind of approaching an asymptote, right? Or something. Yeah, it does seem to be okay, तो asymptote अचीव कर रहा है, मतलब कि क्या दोनों के दोनों इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्डर है? ओके, दोनों रहेंगे ऑफकोर्स, सेम ही ऑर्डर के रहेंगे, बट क्या ये एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? आई गेस या यू कैन से सो. सो 5 पे क्या हो रहा है इसका? 1.5 का कुछ 1.2 हो गया. ओके, अच्छा इसका देखते हैं ना पहले. सो 1, फिर क्या ये किस टाइप का ग्राफ है? 0.6 ओके, दिस इज 0.6 ओवर देयर. तो जो एसिम्पल अचीव कर रहा है इट्स लाइक 0.6. वेट, व्हाट? दैट डजंट मेक एनी सेंस. व्हाई इज दैट थिंग? 0 से क्यों नहीं स्टार्ट करो तुम? तो 0.6 पे ऐसा हो रहा है. हाँ, so weird. मुझे नहीं समझ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें. किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये तो मुझे बताओ एटलीस्ट. ओके, इसका इनिशियली रेट था 0.2/5, राइट? ओके, या सो इसका 0.2/5 था और इसका क्या है? इसका है ओके ओके ओके. सो लाइक तुम्हें रेट्स एच में दिए हैं तो तुम उनका रेशियो निकाल, एंड दैट्स द सेम थिंग एज, राइट? ओके, समझा मैं. इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड थिंग. और तुम्हारा टाइम रिक्वायर्ड सेम है, राइट? सो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना होता है, एंड देन या ओके, दैट्स काइंड ऑफ द थिंग. आई गेस यू कैन से सो. जो एवरेज रेट है, बट ये क्या ये एवरेज रेट है? दिस लुक्स प्रेटी मच लाइक द इंस्टेंटेनियस रेट एक्चुअली. ओके, सो लाइक कॉन्सेंट्रेशन 1 पे तुम्हारा जो रेट है, सो 1 पे तुम्हारा रेट है क्या? 0.2/5, राइट? यानी कि 1/25. और 1.5 कॉन्सेंट्रेशन पे तुम्हारा रेट क्या है? इसमें 3 मिनट्स आ गए, राइट? सो 0.3/5, या 3/50 बोल दो इसको, 150 बोल दो इफ़ यू वांट. विच मीन्स ओके, इट्स इंक्रीजिंग लीनियरली, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर ही है इनफैक्ट, राइट? सो क्या आपने को 1.8 चाहिए? इट्स लाइक 1.8 ऑफ दिस थिंग बेसिकली. सो 18 टाइम्स, अच्छा 0.2 है ही ना उसमें. दिस थिंग इसको अच्छी तरह से करते हैं. 18 times 4, so okay, 1.8 times 4/100, right? That would be the rate, which is like 4 and 32, like 7.2 times 10 power 72 times 10 power ये 3 बोल सकते हैं. या कितना हो जाएगा ये? 7 2 1 2 3, yeah, like 0.072. Of course 0.072. Next question. For a certain reaction of order n, the time for half change is given by this thing, okay, where k is a constant, c naught is the initial concentration. What is n? So
तुम्हारा जो टी हाफ है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 1/2, राइट? या सो वंस अगेन व्हाट वाज द थिंग कि n-1 इज इक्वल टू नेचुरल, सो लाइक डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ टी 1/2 फिर टी कुछ भी लाइक 1/x बोल दो, एंड अपॉन डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट, राइट? निगेटिव वगैरह वो हो जाएगा. सो इस केस में क्या हो रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ सो बना टी हाफ इट बिहेव्स लाइक दिस, ठीक है ना? यू कैन डू दिस थिंग. सो इस केस में क्या हो रहा है, डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ टी 1/2 इज इक्वल टू, ओके आई शुड से या ओके इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 स्टार्ट में, एंड इट्स लाइक डेल्टा नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट. या जितना कॉन्सेंट्रेशन बड़ा है उतना kind of weird, isn't it? Okay, order n, what is n basically, right? This must be the thing, right? Delta natural log of p1/2 equal to half delta. वही तो अपन हमेशा से करते थे. क्या पे नेगेटिव भी चालू था? I guess there was a negative or something like जब तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो तुम्हारा रेट बढ़ता है कि कम होता है? कम होगा ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज या तो लाइक जो लास्ट टाइम अपने को मिला था, लेकिन कहाँ पे गया वो क्वेश्चन? या ये चीज़ इसमें क्या हो रहा था, इसमें तुम्हारा टी हाफ बढ़ रहा है एज योर रेट इज ओके, एज योर प्रेशर इज डिक्रीज. हाँ ओके, सो एक्चुअली डज मेक सेंस. या इट डज मेक सेंस. तुम्हें उसको हाफ करना है, राइट? उसको ख़त्म नहीं करना, उसको हाफ करना है सिर्फ. या ओके, हो सकता है, ठीक है ना? सो इस केस में लाइक देयर वाज अ नेगेटिव, एक्चुअली यू हैव टू पुट दैट नेगेटिव, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा. सो इस केस में ऐसा हो रहा है, मतलब कि नेचुरल लॉग ऑफ टी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट दैट इज जस्ट 1/2, लाइक n-1 इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2 बोल दो, मतलब कि n इक्वल टू 1/2, राइट? या इट्स अ हाफ ऑर्डर थिंग. So 0.5. Next question. Given that for a reaction of order n, the integrated form of the rate equation is this thing. कितना घटिया क्या है ये, कुछ भी. Where C and C naught, okay, C naught and C are the values of the reaction, sorry, what reactant concentration at the start and after time t. What is the relationship between t 3/4 and t 1/2, where t 3/4 is the time required for C to become 1/4 of C naught. Okay, cool. So right, मतलब वो जो चीज़ है, let's just say like C is 1/x C naught, right? तो उसको इसमें पुट कर दो, you'll just get like x power n-1 आएगा यहाँ पे, and that -1, और फिर बाद में सब कुछ कॉन्स्टेंट्स है, we don't, okay, and then t is proportional to this thing basically, right? Yeah. So t 1/4 is equal to some constant, just call this constant like a. Sorry. और यहाँ पे आ जाएगा 4, I should say it's t 3/4 actually. यहाँ पे 4 power n-1 -1, और for t 1/2 it would just be like a, and then you got 2 power n-1 -1. So इनको डिवाइड करने पे just get like 2 power n-1 plus 1, because a minus b, a plus b. So this is the thing. Yes, next question. The time elapsed of a certain what between 33% completion of a first order reaction is 30 minutes. Of a certain क्या ग्रामर है इनका. Okay, so I think तुम बोल रहे time elapsed between 33% and 67%. Completion of a first order reaction is this thing, 30 minutes. What is the time needed for 25% completion? Okay, तो 33% पे कितना बचा हुआ रहेगा? It's like 67%, और इस पे it's 33%. Okay, that's kind of a weird thing. So समझा क्या हो रहा है यहाँ पे, like natural log of, इसमें negative, okay, then t2 upon t1, right? Sorry, c2 upon c1. Yeah, that makes more sense. I should say it's like natural log of c2 upon c1, which is just 33/67. That's equal to negative kt. So इसमें जो आपको टाइम लगा, it's this thing, इसको t1 बोल दो,
And what is the time required for 25% completion? So like natural log of, once again 0.01 यानी कि 75%, right, बचा हुआ है. So 75 upon 100, yeah, it's like 3/4. Isn't that right? Isn't that right? Yeah, that's just equal to negative -82. Must be thing. So this is the 1 upon 2, I guess, approximately. Instead of 2 upon k is equal to t1, and 3/4 बचा हुआ है. So like natural log of 4/3 upon k is equal to t2. So you want what? You want t2 in terms of t1 first of all. Like t2 is just equal to t1. You write here is natural of 4 upon 3. Natural form is natural of 3 upon natural of 2. Yeah, that makes sense. This can also be written as like t1 and then, oh मैंने ये पहले क्यों नहीं किया? Why did I think of it? You can write this as like natural log of 10 times log base 10 हर जगह पे. So instead of using natural log of 2, yeah, but like you already have values in natural log of 2, तो फिर क्यों ना use करूँ मैं, right? This thing is just 2 natural log of 2 anyway, right? तो ये हो जाएगा just 2 minus natural log of 3 upon 2. So natural log of 3 upon natural log of 2, which is like 1.1 approximately upon 0.7, right? Yeah, this is the thing. So t1 क्या था, कितना था? 30 minutes. You want in minutes, right? 2 minus 11 upon 7, which is 14 minus 11, कितना हो जाएगा? 3 upon 7. So 90 upon 7 approximately, which is 1 of 20 के लिए 13 minutes. And that's not there. क्या गड़बड़ हो गई इसमें? 4/3, that's 2, right? 25% completion. एक मिनट, 30 मिनट से इतने बड़े वैल्यूज पे इसमें कैसे आ गए? What is this? इसमें तुम्हारा हाफ हुआ था, राइट? तो हमारी जो हाफ लाइफ है दैट इज 30 मिनट्स, एंड तुम्हें 25% कंप्लीशन करना है, विच मीन्स तुम्हें 3/4 करना है इसको. कि उसके लिए तो ऑफकोर्स कम टाइम लगना चाहिए, राइट? बिकॉज इसमें तुम 50% कंप्लीशन कर रहे हो, इसमें तुम सिर्फ 25% कंप्लीशन कर रहे हो. सो इसमें ऑफकोर्स कम टाइम लगेगा. एंड हाउ इज दिस मोर टाइम? आई हैव नो आइडिया. इट शुड हैव बीन 75% कंप्लीशन, तब तुम मोर टाइम बोल सकते थे, बट दैट वुड बी कंप्लीट डिफरेंट थिंग. ये गलत है, इट्स जस्ट रॉन्ग. इसमें आंसर है ही नहीं तुम्हारा, राइट? या अगर कुछ और था, 300 मिनट्स होता, दैट वुड हैव मेड सेंस, बट ये 30 मिनट्स है, एंड दिस डजंट मेक सेंस. या अगर 300 होता देन आई वुड जस्ट से 125 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, बट इट्स नॉट, इट्स 30 मिनट्स. मे बी तुम्हें सेकेंड्स में चाहिए, क्या पता. कुछ तो गड़बड़ हुई है तुम्हारे लिखने में, बट ठीक है. नेक्स्ट, a first order reaction is 50% completed in 20 minutes at 27 degrees Celsius and 5 minutes at 47 degrees Celsius. The energy of activation of the reaction is, so once again what do you have? Just have like t1 upon 2 is equal to natural log of 2 upon k. Like k is just equal to t1 upon 2 upon natural log of 2, I should say. Actually गड़बड़ हो गई मेरी. Natural log of 2 upon t1 upon 2, sorry. And we know that k is just equal to, so yeah, like e power negative, so a e power negative delta h upon r times the temperature, sorry upon r times the temperature, right? So इसका मुझे natural log देखना चाहिए most likely. Natural log of k is equal to natural log of 2 minus natural log of t1 upon 2, right? Or it's just equal to this thing, natural log of a minus this thing, okay, natural log of a minus delta h upon r t, right? So the change in this thing, like natural log of कितना change हुआ, कहाँ पे चला गया सब कुछ, कहाँ पे मर गया यार? So 20 minutes and then
and then 5 minutes, right? So natural log of 4 is equal to delta H upon R, और initially तुम्हारा जो time, so this temperature था, that was like कितना 27 डिग्री सेल्सियस, right? So इसके लिए 1/300 and then it's 47, so like 1/320. That makes sense. So delta H upon R, let's just take out 1/300, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, just 1 minus, so 300/320, which is like 1 plus 20, 30/32 basically, like yeah, so 1 plus 2/30 की power -1, right, which is delta H upon R times 1/300, और यहाँ पे आ जाएगा क्या कर रहा हूँ ये, यहाँ पे नेगेटिव वगैरह आने वाला है, oh god, that was unexpected. नेगेटिव कैसे आ गया भाई इसमें, दिस मस्ट बी स्मॉलर क्वांटिटी, सो अच्छा नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट 2/30 दैट यू लुक फॉर, सॉरी 2/300 यार, बिकॉज या मैं नॉर्मली तो कर सकता था इसको, जस्ट 20/300 का स्क्वायर, दैट वॉज ऑल्सो बेटर, सो जो भी है हो गया ना इन दी एंड, डेल्टा एच अपॉन आर, देन यू गॉट 2/9 टाइम्स 10⁻⁻4, राइट, दैट्स द थिंग, और देखो निकालना क्या बाय द वे, एनर्जी, और एक्चुअली डेल्टा ई चाहिए, सो द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, नॉट डेल्टा एच, हर जगह पे ई ए डाल दो डेल्टा एच की जगह पे, सो ई ए इज जस्ट 9R नेचुरल लॉग ऑफ 4/2, और फिर यहाँ पे 10⁻4 आ जाएगा, राइट, यस, and you want in kilojoule per mole, so 9 times 8.3 times natural log of 4 is 2 times of 0.7, right, पर अपॉन 2 ये गया just 10⁻4 यहाँ पे, so this is like 9 times 8, 83 times 7 times 10⁻2, yeah, okay, let's do it, 83 times 63 basically, 63 like, okay, 9, then you want 2 4 0, just okay, 8 1 carried on, 48 क्या कर रहा हूँ मैं, 9 48 and 1, okay cool, 9 2 1 carried on 3, यहाँ पे 2 1 carried on 5 5 2 2 9, just that much, okay, that is of 10⁻2 actually, so 522.9 kilojoule बोल सकते इसको, so where is that, oh something's not right about this, this should have worked, क्या गलत हो गया इसमें, it was 10⁻4 right, हाँ क्या हो रहा है यार, what's different is 8.3, वो तू कंज्यूम कर लेता है, just that, and this should have worked, yes this should have worked, for some reason ये काम ही नहीं किया, yeah, it's like that, these many kilojoules, so क्या गलत हो रहा है मेरा, एडिड इन जूल्स पर मोल एंड एवरीथिंग, सो ये करेक्ट होना चाहिए था, सम रीज़न ये करेक्ट नहीं है, 0.7 वही कंज्यूम हो गया है, दिस शुड बी 10⁻2, जस्ट दैट, यहाँ पे 10⁻4 ही चाहिए ना, और कुछ और चाहिए अपने को, ओह यहाँ पे 20 चाहिए था फिर, इसलिए मैंने 2/30 लिखा था, ओके दिस वॉज रॉन्ग, सो यहाँ पे 10 पावर एक्चुअल में क्या आएगा, -3 आई थिंक, यहाँ पे 10⁻3 आएगा इस केस में भी, दिस विल जस्ट बी 10 in fact, so what you will actually get is like 52.29 kilojoules, मतलब 52.3 actually, which is closest to this thing, yes, next, so for the first order reaction carried out at 27 degrees Celsius, if this much percentage of the reactant molecules exist in the activated state, so क्या होता है, E A upon RT, that's the fraction of molecules in activated state, yes, okay, which is इतने परसेंट तुम बोल रहे हो, like 338 times 10 power -19, right, that's equal to this thing, okay, the EA of the reactant is
ओके तुमने आर टी निकालना पड़ेगा 300 टाइम्स 8.83 टाइम्स 30 विच इज़ 2490 लाइक 2490 yes which is like 2500 बोल दो just e power negative ea upon 2500 this thing so इसको मैं लिख सकता हूँ maybe not so easily let's do it a little different let's just say but there must be natural log of okay we just want natural log right and then फिर अपने को उसको लिखने आएगा natural log of 10 like 2.3 times log just log of ये चीज़ 38 times 10 power negative 13 right okay and this would be equal to negative EA upon RT तो फिर EA is just this thing negative of this times of RT so 2.3 RT चाहिए अपने को right yeah so R is like 300 times sorry that's T and R is just 8.3 and then we got this thing like 8 times 83 and 23 this much right odd so करते हैं फिर 83 and then 23 9 24 ये हुआ है ना 1000 बार yes 6 and then you got 16 so 901 kind of like 1309 and that times of what that times of 8 so यहाँ पे जगह 8 and 24 just 104 and then you got 72 right so 10472 is this value okay that's very weird so 10472 times और वो सब कुछ नेगेटिव है by the way okay negative and then you got log base of this thing like just 19 minus एक काम करो write this as like approximately 4 times 10 power negative 18 so it's like 18 times okay 18 minus 0.6 बोल सकते हैं ना yeah that's a good approximation and yeah that's the thing so just ये यानी कि negative 1 approximately कितना है ये 10 power 1 2 3 4 4 10 power 4 ये हो जाएगा 17.4 17 नहीं बोल दो इससे अच्छा तो जो भी है like 1.74 times 10 power negative 13 but sorry negative 3 and all of that is negative right 10 power positive क्या कर रहा हूँ मैं और ये आएगा जूल पर मोल में सो एक्चुअली किलो जूल पर मोल में कितना होगा 1.74 जो कि नहीं है इसमें क्योंकि 17.4 वेट कुछ भी गड़बड़ हो रही है इसमें sorry for this thing it's just 174 times 10 power 3 नेगेटिव तो ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं जस्ट 174 उसके पास में चाहिए अपने को और वो भी नहीं है यार इसमें तो क्या गलत हुआ अपना ये अपना कैलकुलेशन गलत हो गया किलोजूल पर मोल में तो ऐसे ही हो रहा है 104 समथिंग्स नॉट राइट अबाउट दिस सो ऑल आई कैन सी क्या गलत हो रहा है यार क्या गलत हो रहा है मेरे साथ में ये तो कैलकुलेशन मैं सही से किया ना यस नहीं अपन ने नहीं किया है सही से इट शुड हैव बीन 1909 पता नहीं मैंने वो लिखा क्यों नहीं सही से या दैट्स मोर लाइक इट एंड दिस टाइम्स ऑफ 8 तो ये पूरा गलत हो गया अपना दिस नंबर इज़ नॉट व्हाट इट शुड बी यहाँ पे सो 72 आएगा एंड देन मैं क्या लिख रहा हूँ ये सब ऐसे गंदे सिस्टम के जैसे हो रहा है ओके एंड देन फिर 2 7 कैरिड ऑन 8 एंड देन इट्स लाइक 1 5 समथिंग सो दिस इज द एक्चुअल थिंग so you know 15272 times कितना 17.4 this is the thing approximate करो 15,000 times 17 yeah तो किलो जूल्स पे करने के लिए 15 and it's just like okay 16 square is 256 minus 1 okay 255 और वो भी नहीं है यहाँ पे अबे पागल हो रहा हूँ ये क्यों नहीं हो रहा है काम ही नहीं हो रहा है ना Honestly, what is wrong with this? It should be 255 or something. वो नहीं है यहाँ पे. Okay, just leave it because ये काम नहीं कर रहा है. Of 3.
0.8 इज, हाँ ना, वो ओपन कर, वो तो मैंने कर लिया, इट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट द मेन प्रॉब्लम. मेन प्रॉब्लम इज कि दिस इज नॉट वर्किंग. लाइक ये नंबर कैसे रीच कर सकता है ये, कुछ भी, दैट्स डेफिनेटली नॉट करेक्ट. ठीक है, ये अजीब है. ओके, दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो.